हेलो दोस्तों, स्पाइसी टच से मैं हूँ स्वाति और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं शिवाजी महाराज रंगोली। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
आपको ये रंगोली कैसी लगी हमें कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ब्लॉग स्पॉट पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फॉलो करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए है। धन्यवाद। स्पाइसी टच स्मार्ट शॉपिंग में आपका स्वागत है। वीडियो में दिखाया गया प्रोडक्ट अमेज़न पे बहुत ही अच्छे डील पे अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप उस लिंक से प्रोडक्ट को परचेज करते हुए तो हमें इसका कमीशन मिलता है। तो आप लिंक को ज़रूर विजिट कीजिए। धन्यवाद। Whether you're just starting to cook or are a seasoned chef, this high-quality carbon steel knife set makes a great addition to your kitchen. These knives have superior high-carbon stainless steel blades. The benefit of the carbon blade is that they are well-balanced and have a longer edge tension, which means less sharpening. Each knife in the set comes equipped with an ergonomically designed triple-riveted plastic over-molded handle for a secure, comfortable grip and enhanced control. Each knife's triple-riveted construction securely attaches the handle to the stainless steel tang, which runs from the blade through the end of the handle. Here's what you'll find in the box. The most invaluable knife to any chef is the chef's knife. You'll use this knife 90% of the time for any of your everyday chopping and slicing. And because it's kind of like a mini chef's knife, the paring knife can do all of the finer detail tasks like peeling fruit or trimming meat. Making croutons for stuffing or slicing a baguette for crostini couldn't be easier with the serrated bread knife. The powerful kitchen shears can do everything from cutting through chicken to trimming herbs for a garnish. Keeping your knife sharp makes using them a lot easier. You can use the included sharpener to sharpen the knives by placing it upright in front of you while holding the sharpener tight. Always hold the knife away from you and pull each side of the knife down the sharpener, gradually diminishing the pressure. Always wash your knives by hand and completely dry them after each use.